मैम इतना हॉट टॉपिक होने के बाद भी 23 मेंबर्स ने ज्वाइन करा है अभी तक बस। सर मैंने तो सबको इंटीमेट कर दिया था, आ रहे होंगे सर। लेट तेईस मैंने भी आपके अमृतसर ब्रांच में भेज दिया था, अमृतसर ब्रांच के मैं थ्रू भी तो सर्कुलेट अपनी करा दिया। प्रोफाइल बना के लगा लिया था व्हाट्सएप पे। 23 आपके ही लग रहे हैं, इसका मतलब जो 23 ज्वाइन हुए ये आपके वाले। बड़े हैं हम। नहीं, बड़े ठीक ही है हैं। वी आर ठीक है। लाइव ऑन यूट्यूब सर। डन डन डन, स्टार्ट करते हैं, जैकी भाई स्टार्ट करो। जी, good evening everyone. I CA Jackie Batra, practicing chartered accountant, here on behalf of NIRC of ICAI. Welcome all the learned members for the today's webinar. Today webinar is how to become IBC professional. That is for the benefit of both the practicing chartered accountant as well as who are in service. So we have with us Chairman of NIRC, C. Abhinav Agarwal ji. Welcome Abhinav Agarwal ji for this webinar. And then we have Nikasa Chairman CA Jagjit Singh Jags with us, and CA Kamal Kumar Bhatia, Chairman Yamuna Nagar branch as a program coordinator here. And then our learned speakers with us, CA Suchita Gupta ji and CA Rajesh Dhawan ji. Welcome everyone for this webinar. So now I invite CA Jagjit Singh ji to say a few words for our members. Jagjit Singh Thank ji, you, please. thank you, Jackie Batra ji. Our very learned, I would say, very young champ, Jackie Batra ji. Being a program auditor, it's a very big duty, very big task on your shoulder. You have to manage the whole the today webinar programs. So, and yes, very learned and very young and dynamic, the chairman of NIRC, Abhinav Agarwal ji. And of course, the Kamal Bhatia ji, the chairman of Yamuna Nagar branch, and both the speaker, very learned speaker, I would say, very experienced speaker, CA Rajesh Dhawan ji and CA Sujita Gupta ma'am. So I welcome all the the participant in this webinar. I welcome on behalf of NIRC. So this is our basically very technical session. The topic is how to become IBC professional. That is a very unique area, when we talk about bankruptcy. So automatically it's a specialization वाला area है जिसमें आप अगर कुछ और करें, if you are doing GST, if you are doing income tax, you have to leave all that if you are actually want to focus on this IBC. So today we have a learner speaker. I will not take much time. So I would say on behalf of NIRC, once again, all the present members this webinar, and stay tuned with us because we have plan under the leadership of C. Abhinav Agarwal ji. We have so many programs as mentioned by Abhinav ji in the last program about the different cities. We you can see the all the logos that is behind as a background. So all the series done, and of course in the process under the leadership of C. Abhinav Agarwal ji. So stay tuned with us and you will learn so many things with this webinar, with the help of this webinar. Thank you. Over to you, Jackie Batra ji. Yeah, thank you, Jagjit Singh, for your kind words. Now I invite CA Kamal Kumar Bhatia ji to say few words for our members. Thank you, Jackie Batra ji. Chairman NIRC CA Abhinav Agarwal, CA Jagdeep Singh Jags, Nikasa Chairman and Program Director. Our guest and today's keynote speakers, CA Rajesh Dhawan ji, CS Suchita Gupta ji, Jackie Batra ji, moderator of today's webinar, our dear fellow members. A very good evening to all of you. I CA Kamal Bhatia, Chairman of Yamuna Nagar branch and coordinator of today's webinar. Welcome all of you. I would like to start by welcoming and thanking our own CA Abhinav Agarwal ji, Chairman NIRC, for giving me opportunity to coordinate this webinar. I must say that NIRC team is doing fantastic work. हम लोग यहाँ ब्रांच में हैं, हमें पता है एक सेमिनार करना होता है तो मतलब 1 वीक 10 डेज हमें प्रिपरेशन में लगते हैं। यहाँ पे सेमिनार एक हफ्ते में कई सेमिनार वेबिनार कर रही है NIRC की टीम। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा सी अभिनव अग्रवाल जी को और उनकी पूरी टीम को, उनकी डेडिकेशन के लिए, उनके जज्बे के लिए।
और we are looking forward to host you here in Yamuna also. Yes, sir. NIRC के साथ मिलके हम सेमिनार करना चाहेंगे। मेरी कल भी बात हुई थी अभिनव जी से, नेक्स्ट मंथ के लिए उन्होंने बोला है। कीप डूइंग गुड वर्क अभिनव जी। आई एम श्योर दैट अंडर योर डायनेमिक लीडरशिप NIRC will achieve the new milestone. Thank you. I also welcome CA जगजीत सिंह जगजी निकासा चेयरमैन। इनको हमने यमुनानगर में कई बार बुलाया है सेमिनार्स के लिए GST के ऊपर, और looking forward to host you again जगजीत जी। I would also like to warmly welcome our guest speaker CA राजेश धवन जी, CA सुचेता गुप्ता जी। जैसे मुझे बताया है, बोथ हैव वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, और जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर उनका काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। थैंक यू फॉर टेकिंग योर वैल्यूएबल टाइम आउट एंड इंश्योरिंग योर प्रेजेंस हियर। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के ऊपर, और आई थिंक जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बेनिफिटेड और एनलाइटेंड होंगे इससे। So I once again welcome all of you and wish you all a very fruitful and enlightening webinar. Thank you. Over to you, Jackie Batra ji. Thank you, Kamal ji, for your great words for everyone. Now I would like to invite Chairman of our NIRC, CA Abhinav ji, to say a few words for our members and speakers. A very good evening to all the esteemed members of this webinar. My Nikasa Chairman Jagjeet ji, my branch Yamuna Chairman Kamal Bhatia ji, our esteemed speakers of this today's session, CA Rajesh Dhawan ji, CS Sucheta Gupta ji, very unique and good name, moderator Jackie Batra ji. I welcome all of you in our second series of Samvad, in which we are taking the topic of how to become a IBC professional. इस टॉपिक के लिए मेरे साथ सुचेता जी बहुत टाइम से टाई अप में थी, और शी इज एन एक्सपर्ट विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years in this field, and our co-speaker of this session CA Rajesh Dhawan ji is also has a very vast experience in this profession, how to become he is already a IBC professional, and today they all guide us how to create an opportunity in this field also. So I request all the members to take the proper benefit and utilize all the resources which we can provide you in becoming this IBC professional platform. And we have also started many more series which you have already seen on my backdrop, right and left side, in which we are taking different sessions, and under the different series. Tomorrow we are taking a session of balance between the professional life and the working life. प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में कैसे हम एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, इस पे कल हमारा सेमिनार है, उसके हमारे कोऑर्डिनेटर मॉडरेटर शालिनी गुप्ता जी एंड हिज टीम. So I would request to all the members to please kindly share all these flyers in their circle also, so that maximum members take the advantage and benefit of our this series and these webinars. हमारा भी मोटिवेशन तभी एनहांस होता है जब हम आप लोगों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो आप लोग उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं. तो ये स्पेशली डिजाइन सीरीज हमने स्टार्ट करी थी. जैसे इस ईयर हमारी टीम ने चार्ज लिया था, तो हमने 9 एजेंडास पे काम किया था, जिसमें हमारे सारे कवर होते हैं, हेल्थ रिलेटेड भी, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल, आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड, AI रिलेटेड, आपका गुरुकुल सीरीज में सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमने सीरीज स्टार्ट करी है. तो जो मेंबर्स जब हमारे पर रिक्वेस्ट करते थे कि आप इंडस्ट्री के मेंबर्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप वुमेन्स एट होम उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि उनको किस तरीके से हम, और ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, सारे स्पीकर्स, रिनाउंड स्पीकर्स हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं. तो मेरी आप मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट है, आप इसको मैक्सिमम नंबर्स में जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो शेयर करें और अपने दोस्तों को इसका बेनिफिट उठाएं. थैंक यू. Thank you, Avinash ji, for providing awareness to the members, means the work undertaken by the NIRC and its team. So now I would like to invite CS Sucheta Gupta ji. Before inviting, I want to say few words about the CS Sucheta Gupta ji. Sucheta Gupta ji is the founder of Sucheta Gupta and Associates, with 14 years of experience in corporate laws, litigations, and compliances in the areas of Companies Act, IBC code, as well as the goods and services tax.
She has dealt with matters before diverse authorities and tribunal in Delhi, like ROC, RD, NCLT, DRT. She is very passionate researcher and deep expertise in company law and IBC Code 2016. So I invite CS Sucheta Gupta ji to start the webinar and say, just guide our members for the topic. Thank you, sir. Thank you for inviting me. और thank you. Good evening, all the participants, all the members of ICAI and अभिनव सर एंड चेयरमैन सर, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने आईबीसी के ऊपर कुछ प्रेजेंट कर पाऊँ। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ आईबीसी प्रोफेशनल। तो आईबीसी प्रोफेशनल बनने के लिए, अगर हम कुछ आईबीसी प्रोफेशनल अगर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें फोकस करना होगा कि हम क्यों बनना चाहते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम एज अ आईबीसी प्रोफेशनल क्यों बनना चाहते हैं। तो अगर आईबीसी प्रोफेशनल अगर हम बनना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आईबीसी कोड को समझना होगा कि आईबीसी कोड क्या है, जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं एज अ डील करने के लिए। एज अ काउंसिल भी हम डील कर सकते हैं, एज अ आईआरपी आरपी भी हम डील कर सकते हैं मैटर्स में। तो हमारे पास बहुत एक वाइड एरिया है जहाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल्स, चाहे वो सीए हो चाहे वो सीएस हो। तो पहले हमें नीड समझनी होगी कि क्या नीड है आईबीसी में, जिसमें हम हमारा प्रैक्टिस एरिया जो हम अपना वाइड करेंगे और कहाँ कहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि क्यों बनना चाहेंगे हम आईबी प्रोफेशनल। जब हमने सीए कर लिया, सीएस कर लिया, इतनी सारी पढ़ाई कर ली, तो अब हम एक और नया कोर्स में हम क्यों इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर मैं करने के लिए आपको अभी एक पीपीटी प्रेजेंट करती हूँ, जिसमें एक ब्रीफ इंट्रो दूंगी मैं कि क्या है ये आईबीसी, क्या है बेसिकली। तो जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू। Sir, can you, all the participants, can you see the screen? Yes, sir. Yes, Yes. yes. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you. तो सबसे पहले एक आईबीसी क्या है, कोड ये कैसे आया, और इससे पहले भी बहुत सारे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स थे, जैसे कि कंपनी कंपनी एक्ट था, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट था, है वो आज भी है, और जो सरसे आई है, सरफेसी एक्ट है। ये सारे एक्ट्स थे, बट क्या नीड अराइज हुई जिससे कि आईबीसी को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले तो ये था कि ये जितने भी एक्ट थे, इनमें डिफरेंट प्रोविजंस थे, और हमें हर हर केस के लिए, जैसे हमारा सरफेसी में है या रिकवरी ऑफ डेट में है, तो वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ क्राइटेरिया थे जहाँ पे सारे लोग नहीं जा सकते थे कि एक ही जगह हमें पूरा एक टाइम बाउंड मैनर में एक फ्रेमवर्क मिल जाए और वो हमारी सारी प्रॉब्लम एक ही जगह सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले तो जो आईबीसी कोड है, उसका जन्म इतने सारे लोगों को, इतने सारे एक्ट्स को खत्म करने के लिए एक कोड बनाया कि आईबीसी कोड 2016 ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्ट जो कम इनटू फोर्स में आया, वो 28 मई 2016 को आया। और उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो प्रणब मुखर्जी थे, जिन्होंने ये एसेंट दी, और ये उस दिन से ऑफिशियल गैजेट में इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब ये एक्ट आया तो शुरू शुरू में तो नहीं लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। उसके बाद में धीरे धीरे केस इसमें आना शुरू हुए। तो सबसे पहला जो केस आया था एनसीएलटी में सबसे फर्स्ट केस आया था सिनर्जिक डूरे ऑटोमेटिव लिमिटेड का केस था, जो 14 अगस्त 2017 को ये पिटीशन फाइल हुई थी। और जो फर्स्ट केस आया सुप्रीम कोर्ट में, वो आया इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआई। तो इन केसेस में जो इनोवेटिव का केस है उसको मैंने ब्रीफ भी किया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे इनोवेटिव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये नया नया केस था, तो पूरी वर्डिक्ट पूरे एक्ट के हर एक प्रोविजन पे एक वर्डिक्ट दी हुई है। तो जब आप केस लॉज वगैरह पढ़ते हो तो आप देखोगे कि उसमें ज्यादातर इनोवेटिव इंडस्ट्रीज के केस का और केसेस का रेफरेंस होता जरूर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं
कि जो हमारा जो ये लेजिस्लेटिव है, एक मिनट से जस्ट शेयरिंग, इसके आगे जो आईबीसी है, जब आईबीसी इंट्रोड्यूस हुआ तो कुछ एक्ट्स थे, जैसे कि इससे पहले था प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, ये रिपील हुआ। प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट था, ये रिपील हुआ, और कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस आए, क्योंकि जब आईबीसी इंट्रोड्यूस हुआ तो इन एक्ट्स में चेंज लाने बहुत जरूरी थे। तो कुछ कुछ एक्ट्स हैं जिनमें ये चेंजेस आए, जैसे कंपनी एक्ट में आया, और रिकवरी ऑफ डेट ड्यू में आया, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन रिपील एक्ट में आया। तो ये सारे चेंजेस कुछ कुछ एक्ट्स में आए। अब अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले ये जो एक्ट है, आईबीसी एक्ट है, वो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। तो ये जो एप्लीकेबल है बेसिकली आईबीसी कोड, वो एक तो आपके इसमें कवर कर लिया कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस। तो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस में आपके सारे तरीके के कॉरपोरेट्स आ गए, अब वो चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, वो सारे इसमें कवर हो गए। फिर इसमें कवर किया एलएलपीज। तो एलएलपी जो जितनी भी एलएलपी कॉरपोरेट हुई है, वो सारी एलएलपीज कवर हो गई इसमें। फिर पार्टनरशिप फर्म एक्ट, जो पार्टनरशिप फर्म को भी इन्होंने कवर किया, फिर इंडिविजुअल्स को भी कवर किया। तो मींस कुल मिला के जितनी एंटिटीज हम बनाते हैं आज की डेट में, चाहे हम वो कंपनी बना रहे हैं, चाहे हम वो एलएलपीज बना रहे हैं, या पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं, या एज अ प्रोप्राइटरशिप, एज अ इंडिविजुअल हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो वहां पे इन्होंने सारे तरीके के पर्सन्स को कवर कर दिया इस एक्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अब जब इतने सारे लोग कवर हो गए, तो ऑब्वियसली स्कोप वाइड हो जाएगा फॉर द प्रोफेशनल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आज की डेट में इसमें जो चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं इस कोड में। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस हैं, सेकंड है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, और थर्ड है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। तो जो सेकंड पार्ट है, अभी तक वो ही इन फोर्स में आया है। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अभी जो केसेस चल रहे हैं वो कॉर्पोरेट पर्सन से रिलेटेड चल रहे हैं, जो एनसीएलटी, एनसीएलटी, चाहे जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अभी जो पार्ट 3 है, वो अभी एनफोर्स में आया ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि जब सिर्फ पार्ट 2 एप्लीकेबल हुआ है, तब इतने सारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ रही है आईबीसी में। और अगर ये थर्ड पार्ट जिस दिन से कम इनटू फोर्स आ गया, उस दिन कितने आईबीसी प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था कि हमें क्यों बनना है आईबीसी प्रोफेशनल, है ना, आईबीसी एग्जाम हाउ टू बिकम से पहले कि हमें क्यों बनना है, तो उस क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा हुआ है। इस एक्ट में अपने आप ही ये बोल रहा है ये एक्ट कि ये सब पर एप्लीकेबल है। अब वो चाहे वो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो एलएलपीज हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, वो सबको कवर कर रहा है। अब कवर इसने सबको कर लिया, उसके बाद में आते हैं कि इसका स्कोप क्या है। तो पहले तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी होगी, किसी कंपनी, कोई कंपनी है या एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है, वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाएगी। फिर उसके बाद में वो लिक्विडेशन प्रोसेस में जाएगी। फिर या तो वो वॉलेंटरी लिक्विडेशन के लिए भी जा सकती है, या उसका लिक्विडेशन इन्फोर्स होगा। इसको मैं वाइडर टर्म में आपको समझाऊंगी कि वॉलेंटरी लिक्विडेशन और नॉर्मल लिक्विडेशन में क्या अंतर है, ठीक है। एंड या अगर वो इंडिविजुअल से रिलेट करती है, तो बैंक, ये पहले इंसॉल्वेंसी होगा प्रोसेस और फिर होगा बैंक्रप्सी प्रोसेस। तो देखा आपने कि यहाँ पे इतने सारे स्कोप्स हैं कि आपको हर जगह आपकी जरूरत पड़ेगी। एज ए आईआरपी अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं, या आरपी बनते हैं, या लिक्विडेटर बनते हैं, वो सारा जो है तभी बन पाएंगे जब हम हाउ टू बिकम एज अ आईबीसी प्रोफेशनल, जब हम वो एक एग्जाम या कुछ भी वो आगे बताएंगे सर। तो अगर हम उसको क्लियर करेंगे तो हम आईबीसी प्रोफेशनल बनेंगे। और ये जो स्कोप है, ये इतना वाइडर स्कोप है, इसमें हमें कहीं ना कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी। अब इसमें रेगुलेटर्स कौन है, कौन रेगुलेट कर रहा है इसको। सबसे पहले एक आईबीबीआई करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड बना हुआ है, एक संस्था बनी हुई है,
जहाँ पे अगर जितने भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो, या वो किसी भी फील्ड से आ रहे हैं, तो उनको ये कंट्रोल करती है आईबीबीआई। दिस इज द रेगुलेटर। अब उसके नीचे आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। जैसे कि एजेंसीज का मतलब हुआ कि आईसीआई की अपनी एजेंसी है, आईसीएसआई की अपनी एजेंसी है, तो ये एजेंसियां बनी हुई हैं। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जो क्वालिफाई हो जाएंगे एग्जाम के बाद, वो होंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। और एक है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, यानी कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, जो डेटा प्रोवाइडर है, वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है। तो बेसिकली हमारे जो रेगुलेटर्स हैं जो कवर किए हैं, वो एक तो आईबीबीआई हो गई, आईपीए हो गए, आईपी हो गए और आईयू हो गए। तो ये चार रेगुलेटर्स हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं इस पूरे एक्ट को, यानी 2016 जो आईबीसी कोड है उसको रेगुलेट करने के लिए है ये। अब एडजुडिकेटर कौन है? एनसीएलटी है और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। अब एनसीएलटी कब एडजुडिकेटर है? जब कोई केस आपके सामने आता है कि वो कॉर्पोरेट एंटिटीज का है, कंपनीज का है या एलएलपीज का है। बेसिकली वो कॉर्पोरेट एंटिटीज होनी चाहिए, यानी कंपनीज होनी चाहिए या एलएलपीज होनी चाहिए। अगर इनसे कोई रिलेटेड कोई केस आता है तो वो जाएगा एनसीएलटी के पास। अगर अब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज कौन हो गई? जैसे इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, तो ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। इनका कोई केस आता है तो वो जाएगा डीआरटी के पास। और जैसा मैंने बताया आपको कि पहले तो ये जो एडजुडिकेटर है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं बेसिकली इनको, क्योंकि जो टर्म्स है एनसीएलटी हम बोलते हैं जब कंपनी एक्ट का टर्म आता है। पर जब आईबीसी के लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एट दैट टाइम दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ एनसीएलटी, दीज आर सेइंग एज अ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। तो एनसीएलटी बेसिकली कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, और बाकी जो कंपनीज एलएलपी सबके लिए, और ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए है। अब हम चलते हैं कि ऐसा क्या है जो आईबीसी कोड है, लोग क्यों जाना चाहेंगे जब इतने सारे रिजोल्यूशन फोरम्स अवेलेबल हैं। तो क्यों नीड है कि हम आईबीसी में ही लेकर जाएंगे कंपनी को? हम चाहे तो हम किसी और एक्ट में जा सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला ये आता है कि ये एप्लीकेबल है कॉरपोरेट पे और नॉन कॉरपोरेट, दोनों टाइप के पर्सन इसने कवर किए हुए हैं। और ये अलाउ करता है क्रेडिटर्स को, चाहे वो सिक्योर्ड हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, चाहे ऑपरेशनल्स हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, अगर उनको कहीं कोई न्याय चाहिए, उनका कहीं कोई ड्यू बनता है, तो वो जो जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो अपना क्लेम इनिशिएट कर सकते हैं आईबीसी के थ्रू। ठीक। थर्ड है कि ये एक टाइम बाउंड मोनिटोरियम एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे आईबीसी जब स्टार्ट होता है तो एक हमें 180 डेज का एक टाइम होता है कि 180 डेज का एक मॉनिटोरियम पीरियड है जो आईबीसी एक्ट में है सेक्शन 14 में, वो एप्लीकेबल हो जाता है उस टाइम पे। तो उस इस अब ये मॉनिटोरियम है क्या? अब मॉनिटोरियम ये है कि आप इस दौरान कोई भी केस जो कंपनी के अगेंस्ट में हो उसको आप इनिशिएट नहीं कर सकते, ना लोअर कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, कहीं भी आप कोई केस फाइल नहीं करेंगे। ये एक मोरेटोरियम का कहा जाए तो एक कंपनी को ये एक बेनिफिट भी है कि उस टाइम पे वो कोशिश कर सकती है कि अपने रिवाइवल के सारे कोशिश कर सकती है। तो सबसे पहले ये एक टाइम बाउंड हो गया मैनर कि हमें जो खत्म करना है, मान लीजिए इंसॉल्वेंसी हमारी स्टार्ट हो गई, तो जो आरपी अपॉइंट होंगे, सबसे पहले तो आरपी जो अपॉइंट होंगे उन्हें ये देखना होगा कि कंपनी को वो एज अ गोइंग कंसर्न चला सके, उसको एज अ रनिंग उनको दिखाना होगा कि वो कंपनी को जितना अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं वो डालें, और उसको एज अ गोइंग कंसर्न उसको चलाने की कोशिश करें। क्योंकि जो आईबीसी कोड है उसका मेन मोटिव यही है कि जो कंपनी है उसको हर तरीके से कोशिश कर ली जाए कि वो उसको हम रिवाइव करा पाए। तो सबसे पहले ये हमारे पास बेनिफिट है आईबीसी कोड में जाने के लिए कि एक तो ये टाइम बाउंड प्रोसेस है और किसी भी टाइप के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, और कोई भी टाइप का जो जिनके ड्यूज बनते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, चाहे सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, कोई भी जा सकता है आईबीसी में। तो बेसिकली ये हो गया। अब देखते हैं कि हु इज एंटाइटल्ड टू इनिशिएट द
CIRP प्रोसेस, कौन है जो CIRP प्रोसेस में जाना चाहेगा, क्यों? इसका आंसर अभी मैं आपको देती हूँ कि एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब हो गया जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, जिन्होंने बड़े बड़े लोन दे रखे हैं कंपनीज को, और उनके जो लोन्स क्लियर नहीं हो रहे हैं और NPO हो गए हैं सारे अकाउंट्स। तो ऐसे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो सेक्शन 7 में कवर होते हैं IBC की। और ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं ये बेसिकली चाहेंगे कि उनका जल्दी से जल्दी उन्हें रिजोल्यूशन मिले, उनके ड्यूज क्लियर हो, तो वो जरूर इनिशिएट करेंगे IBC कोड 2016 में। अब मैं अपॉर्चुनिटी बता दूं आपकी कि अगर हम IRP बन गए या RP, हाउ टू बिकम RP, तो वो हम बन गए, हमने क्लियर हो गया हमारा सब एग्जाम। तो अब हमको क्या करना है आगे कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो बिना RP की कंसेंट के अपनी पिटीशन फाइल ही नहीं कर सकता NCLT में। सबसे पहले तो अगर उसको NCLT में अपनी कोई पिटीशन फाइल करनी होगी तो पहले उसको RP, अपनी तरफ से कोई RP को अप्रोच करना पड़ेगा, या कोई IP प्रोफेशनल को करना पड़ेगा अप्रोच, कि वो अपनी कंसेंट दें और उनकी कंपनी, उनके जो एप्लीकेशन, उनकी जो पिटीशन है उसमें वो एज अ RP अपॉइंट हो जाए। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो बिना RP या IRP, बिना IRP की कंसेंट के पिटीशन फाइल ही नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्कोप हमारा यहाँ आ गया कि हम क्यों बनना चाहेंगे RP, हम क्यों बनना चाहेंगे? तो हम इसलिए बनना चाहेंगे कि एक तो इसमें काफी वाइड स्कोप आपको समझ आ गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे बहुत सारे हैं, चाहे वो NBFCs हो, चाहे वो बैंक्स हो, तो वो उनके कहीं ना कोई ड्यूज बनते ही हैं कभी ना कभी कंपनीज पे, तो वो जा सकते हैं। अब दूसरा है हमारे पास ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी क्या कहती है कि ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है इन्होंने कोई सर्विसेज दी है या गुड सप्लाई की हुई है कंपनीज को, तो ये भी IBC में जा सकते हैं। तो इनके लिए बड़ा अच्छा हो गया कि 180 डेज में इनको रिजोल्यूशन मिल रहा है, और इनके लिए मैंडेटरी नहीं है RP की कंसेंट उस समय जब वो ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं। पर जैसे ही इनकी पिटीशन एडमिट हो जाएगी कोर्ट में तो वैसे ही इनको वहां पे एक RP को अपना अपॉइंट करना होगा। अगर ये अपॉइंट नहीं करेंगे पहले से तो वो कोर्ट अपॉइंट करेगी, तो यहाँ भी RP की जरूरत पड़ गई, यहाँ भी IP प्रोफेशनल चाहिए। अब थर्ड कैटेगरी है कि कॉरपोरेट एप्लीकेंट इटसेल्फ, यानी कि जो कॉरपोरेट एप्लीकेंट है मतलब कॉरपोरेट एंटिटीज हो गई, अगर उन्होंने कोई डिफॉल्ट कमिट कर दिया है तो वो अपने आप ही एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, शेयर होल्डर्स की कंसेंट लें और ये एक फाइल कर लें पिटीशन। तो जब ये पिटीशन फाइल करेंगे तो उनको भी RP की जरूरत होगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की जरूरत होगी। तो ये जो तीनों पिटीशन है, तीनों कैटेगरीज हैं, यहाँ हर तीनों कैटेगरीज में एक IP की जरूरत हमें आ गई कि एक IRP हमें अपॉइंट करना ही करना है, और उसके लिए एक IP प्रोफेशनल की नीड अराइज हो गई। तो अब आगे कंटिन्यू करती हूँ कि अब जब ये IP प्रोफेशनल जो अपॉइंट हो गए तो इनका रोल क्या होगा? इन इन जो एज अ IRP यहाँ पे बन रहे हैं, तो बेसिकली जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, जितना भी मैनेजमेंट है कंपनी का, जितनी भी पावर जो डायरेक्टर्स के पास थी वो सारी पावर IRP या RP के पास आ जाएगी। तो जब हम सपोज करिए कोई कंपनी गई एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक के 10 करोड़ के ड्यू बनते थे किसी कंपनी पे, तो उसने NCLT में सेक्शन 7 की एक पिटीशन फाइल करी और उसने एक अपना उसके साथ पिटीशन के साथ साथ एक कंसेंट ले ली एक IP से कि ये IP हमारे अपॉइंट होंगे इस मैटर में। तो अब जब वो IP अपॉइंट होंगे उस मैटर में, जब कोर्ट ने एडमिट कर ली वो पिटीशन, तो उसमें जितना भी जो भी कुछ था, जितना भी हैंडओवर था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो सारा उनको IRP को करना पड़ेगा। तो पहले तो सारा हैंडओवर हमारे हाथ में आ गया, अब हमें अपने हिसाब से उस कंपनी को चलाना है और हमें ये पूरी कोशिश करनी है कि हम इस कंपनी को रिवाइव कर पाए। तो एज अ IRP जब IRP बना देगी कोर्ट, उसके बाद में आपको बताती हूँ और टर्म्स भी आएंगे अभी इसमें।
आरपी कैसे बनेंगे और बाकी चीजें कैसे होंगी। तो पहली नीड यहाँ अराइज हो गई, सारा हैंडओवर हमारे हाथ में है, तो हमें एक तो आईपी प्रोफेशनल बनने से पहले पहले इतनी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, हम इतने कैपेबल हैं कि नहीं, हमें ये भी सोचना होगा कि हम ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो एक चैलेंज भी कह सकती हूँ मैं कि ये एक चैलेंज भी है, एक आईपी एक आईआरपी के लिए, आरपी के लिए, लिक्विडेटर के लिए। तो उस केस में हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह कंपनी को चलाना होगा आगे। अब जब ये हमने इंट्रोड्यूस तो ये कर दी, अपनी पिटीशन हमने फाइल करी कि आईआरपी अपॉइंट हो गए हमारी कंपनी में। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है वो जो जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो आईआरपी के हाथ में चला गया आपका पूरा मैनेजमेंट। अब आईआरपी ही अपने तरीके से उसको हैंडल करेंगे केसेस को। अब जब आईआरपी अपॉइंट होंगे उसी टाइम पे उसी ऑर्डर में कोर्ट ये भी लिख देती है कि आपका जो सेक्शन 14 है वो उस दिन से एप्लीकेबल हो गया। यानी कि जिस दिन मान लीजिए आपकी आज 7 मई 2024 को कोई आईबीसी में मैटर गया और आईबीसी स्टार्ट हो गई, तो सबसे पहले आप आईआरपी बन गए। अब आईआरपी बनने के बाद आपका जो सेक्शन 14 है इसी डेट से स्टार्ट हो गया और आपको 180 डेज दिए गए कि अब आपके अगेंस्ट में कोई केसेस फाइल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब आप इस कंपनी को रिवाइव करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हम आईआरपी अपॉइंट हुए ऑर्डर से, सेकंड हमें मॉरेटोरियम मिल गया एक पीरियड। अब आईआरपी को क्या करना है कि उसको सारे एफर्ट्स करने हैं अपने कि वो उसको एज अ रनिंग बिजनेस चला सके। तो सीओसी उसे कंस्टिट्यूट करनी होगी। अब सीओसी का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं कि सीओसी क्या है। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर है। जब आईबीसी स्टार्ट होती है सबसे बड़ा रोल होता है, एक तो आईआरपी आरपी लिक्विडेटर इन सबका रोल होता है, उसके अलावा अगर कोई रोल होता है तो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर, सीओसी की फुल फॉर्म है इज द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो ये जो कमिटी है ये एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर नहीं है, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर मान लीजिए आपने कोई आईबीसी में आप गए और आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर था, इसमें कुछ प्रोविजन है सेक्शन के, तो वो ये कहते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन सकते हैं। अब भाई अब मान लीजिए मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मेरा पैसा नहीं दे रही है कंपनी, और इसमें कुछ थ्रेशोल्ड की भी लिमिट आई है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो अब मैं गई कि मेरे को तो मेरी प्रोफेशनल फीस मिल नहीं रही है एज अ सीए सीएस और मेरे 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट हो गया है, अब मुझे जाना है आईबीसी में। तो मैंने उस कंपनी के अगेंस्ट में आईबीसी फाइल कर दी, सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर दी। और अब सीओसी कौन बनेगा, क्योंकि प्रोविजन तो कहता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर विल कंस्टिट्यूट द सीओसी। तो इस केस में जहां पे कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं उन्हीं को सीओसी एज्यूम कर लिया जाएगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट आया कि सबसे पहले आईआरपी आरपी सब कुछ, सारी पावर आईआरपी और आरपी के हाथ में है। उसके बाद जो डिसीजन होंगे कंपनी पे कि हमें कोई फंडिंग और लानी है, कंपनी को कैसे गोइंग कंसर्न करना है, कोई असेट सेल करनी है या जो भी मतलब डिसीजन लेने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीओसी लेके आएगी। तो बेसिकली सीओसी का रोल सबसे ऊपर है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, पूरी पूरी जो पावर है वो सीओसी के ही पास है। और उसके अलावा आईआरपी के पास है कि आईआरपी कैसे मैनेज करे, सारे जितने भी चीजें हैं उनको कैसे मैनेज करें। अब आईआरपी के सामने एक चैलेंज और आएगा जब हम आईआरपी बनेंगे। चैलेंज तो बहुत सारे हैं इसमें, तो कुछ चैलेंज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे सपोज करिए आप आईआरपी अपॉइंट हो गए तो आपके पास क्लेम आने शुरू हो जाएंगे। इनकम टैक्स से क्लेम आएगा, क्लेम फॉर्म आएगा, सेल टैक्स से क्लेम फॉर्म आएगा, और जितने भी ड्यूज कंपनीज ने जितने भी कर रखे होंगे वो सारे अपने अपने क्लेम आपके पास भेजेंगे। तो अब आपका रोल आता है कि आप वेरीफाई करें सारे क्लेम्स जो आपके पास आए हैं, जितने भी क्रेडिटर्स आपके पास क्लेम लेकर आए, तो उनके जो क्लेम फॉर्म्स हैं उनको आपको वेरीफाई करना होगा प्रॉपरली कि इनका जो ड्यू है वो सच में उनका ड्यू बनता भी है कि नहीं बनता है। तो एक पावर ये आ गई और इसमें चैलेंज भी है। तो आईआरपी आरपी हम बन गए, बट लेकिन हमारे पास जो चैलेंजेस हैं उनको भी हमें हैंडल करना है।
तो जब ये क्लेम फॉर्म आएंगे तो हमारी वेरिफिकेशन की पावर होगी कि हम वेरीफाई करके बोल दें कि आपका ये क्लेम है, इसके अकॉर्डिंग इतना बनता है या नहीं बनता है, वॉट एवर। तो ये एक पावर हो गई आईआरपी की। अब क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे सीआईआरपी में सारी कंपनियां सब चली, मतलब धीरे धीरे देख रही हूँ तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो सीआईआरपी में जा रही हैं, बट लेकिन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो सीआईआरपी में नहीं जा सकती, या कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस भी है कि हम सीआईआरपी नहीं इनिशिएट कर सकते? तो वो रेस्ट्रिक्शंस मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हम सीआईआरपी प्रोसेस कहाँ पे इनिशिएट नहीं कर सकते। सपोज करिए कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और इस ये ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस में चली गई है। अब ये लास्ट ईयर गई थी, मई में ही गई थी, तो अभी इसको 12 मंथ्स ही हुए हैं इसकी सीआईआरपी कंप्लीट हुए। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो जिसकी जो ऑलरेडी सीआईआरपी में जा चुकी है और उनके जो अभी टाइम पीरियड जो 12 मंथ्स का है वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसी जो कंपनीज हैं वो सीआईआरपी में नहीं जाएंगी। अब इसमें आपको एक टर्म और आ रहा है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी। उससे पहले मैं आपको थ्रेशोल्ड बता दूं हुआ क्या था। जैसे 2016 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये एक्ट जो आईबीसी एक्ट, क्योंकि मैं तो तब से डील कर रही हूँ इसमें। तो इसमें क्या थी, एक लिमिट थी 1 लाख की, कि अगर आपका क्लेम, मान लीजिए फाइनेंशियल क्रेडिटर है चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर है आप, अगर आपका 1 लाख का क्लेम है तो आप आईबीसी में लेके जा सकते हैं। तो उस टाइम पे सिनेरियो ये था कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ढूंढने मुश्किल हो गए थे और काउंसिल ढूंढनी मुश्किल हो गए थे, क्योंकि एज अ काउंसिल हम लोगों ने काफी केसेस रिटर्न किए थे उस टाइम पे कि हम ये आपका ये केस है इतने अमाउंट का है, हम ये वाला केस नहीं ले पाएंगे। तो बेसिकली उस टाइम पे एक रिवॉल्यूशन आ गया था इसमें जो आईबीसी में था। फिर कोविड में क्या हुआ, जब 2020 में कोविड आया तो 1 लाख की जो लिमिट थी, क्योंकि उस टाइम पे तो ज्यादातर आपको पता ही है सब लोग डिफॉल्टर हो गए थे, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, तो कुछ ना कहीं सबका चल रहा था। तो वो उस केस में क्या है कि वो जो डिफॉल्टर हो गए थे उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे तो सारे आईबीसी में चले जाएंगे, अगर 1 लाख जिसके भी नहीं दिए वो ड्यू हो गए तो वो कंपनी के अगेंस्ट में आईबीसी चला जाएगा। तो उन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा के 1 करोड़ कर दी। तो आज की डेट में जो थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है वो 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है। तो अभी अगर हमें कोई इनिशिएट करनी है एप्लीकेशन आईबीसी में तो वो 1 करोड़ पे हम कर सकते हैं। अब जैसा रिवॉल्यूशन उस टाइम पे आया था और वैसा ही रिवॉल्यूशन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जब हमारा जो पार्ट 3 है वो आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है, बट उसमें भी एक लिमिट है 1 लाख की। तो अगर अगर वो पार्ट 3 जो कि एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स पे या प्रोप्राइटरशिप फर्म पे या पार्टनरशिप फर्म पे, अगर वो कम इनटू फोर्स में आ गया तो उस टाइम पे कितने सारे आईबीसी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हमको क्यों बनना है आईबीसी प्रोफेशनल, उसका आंसर यहाँ से दिया गया। तो कुछ कंपनीज हैं जो कि आईबीसी में नहीं जा सकती हैं, जैसे कि एक जो ऑलरेडी सीआईआरपी जिसकी कंप्लीट हुई हो, एक प्री पैकेज रिजोल्यूशन प्रोफेशन प्रोसेस। ये क्या है, ये समझिए कि जो प्री पैकेज रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो 10 लाख, अगर आपकी 10 लाख की लिमिट है, अगर आपका ड्यूज बनता है 10 लाख का, आपके ड्यूज हैं, तो कंपनी खुद से जा सकती है कि वो कहे कि हमें प्री पैकेज रिजोल्यूशन प्रोसेस में जाना है, जिससे कि हमारे जो ड्यूज है वो रिस्ट्रक्चर हो पाए या उनको कैसे रीपे करना है उनके लिए एक अच्छा रिजोल्यूशन प्लान आ पाए। तो वो अपने आप से डिसीजन लेते हैं और वो सीआईआरपी इनिशिएट करते हैं। उस समय भी आईआरपी या आईपी की जरूरत पड़ती है, तो हमें उस समय भी आईपी प्रोफेशनल्स अवेलेबल कराने होंगे कि इतने आईबीसी प्रोफेशनल्स हैं। तो ये सारी जितने भी इसके एक एक पॉइंट्स में जहां जहां भी अगर सीआईआरपी इनिशिएट हो रहा है या फिर चाहे लिक्विडेशन में जा रही है कंपनी, चाहे बैंकरप्सी में जा रही है, हर हर दूसरे पॉइंट पे एक आईपी प्रोफेशनल की जरूरत हो रही है। तो अब कुछ टाइमलाइंस भी दी हुई है इस सीआईआरपी प्रोसेस में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और सपोज करिए आपकी एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो आज चली गई आईबीसी प्रोसेस में, तो आईबीसी एडमिट हो गई इसके अगेंस्ट में एनसीएलटी में। तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। आप आरपी बन गए, आईआरपी आप अपॉइंट हो गए, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया आपको, आपने सारा हैंड ओवर ले लिया, कंपनी का चार्ज ले लिया।
ठीक है, बट लेकिन जैसे ही ऑर्डर आता है आपका, मान लीजिए आज की डेट में अगर प्रोनाउंस हुआ है, तो आपको आज की डेट से विद इन थ्री थ्री डेज, जो टी है यहाँ पर, टी है कमेंसमेंट ऑफ CIRP एंड अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, यानी कि जिस दिन से आपकी CIRP कमेंस हुई है और जिस दिन से आप एज अ IRP अपॉइंट हुए हैं, उसके विद इन 3 डेज में आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे आप, फिर आपके पास क्लेम्स आएंगे। मान लीजिए मैंने आज बोल दिया कि आज की डेट में पब्लिक अनाउंसमेंट किया, तो मेरे पास विद इन 14 डेज में वो क्लेम आने शुरू हो जाएंगे कि ये क्लेम है। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 90 डेज तक है कि हम कब तक क्लेम सबमिट कर सकते हैं और कब तक हम एडमिट कर सकते हैं। तो ये 90 डेज मैक्सिमम है, जब से जिस डेट से हमारी CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। उसके बाद मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमें वेरिफिकेशन करना होगा क्लेम का। मान लीजिए आज आपके आप क्लेम आए, तो क्लेम को आप वेरीफाई भी करोगे, तो वो पावर किसके पास है? वो IRP के पास है। IRP चेक करेंगे कि हमारा जो क्लेम हमारे पास आया है उसके हिसाब से, बुक्स के हिसाब से या बैंक्स के हिसाब से या जहां भी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड हुए हैं उसके साथ में, उसके हिसाब से क्या वैल्यू बनती है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा क्लेम। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ AR, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ये बताऊं कि देखो, एक तो आप IRP बनी गए, अब आप IRP बन गए, आपको मतलब कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया या आपको एज अ लिक्विडेटर बना दिया, वो भी कोर्ट से आप बन गए। पर एक और अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं, क्योंकि IBC कोड सिंपली एक्सप्लेन करता है कि आपको अगर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो वो भी IP क्वालिफाइड ही प्रोफेशनल होने चाहिए। तो एज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए भी हमें IP प्रोफेशनल होना जरूरी है। तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये आ गई कि सपोज करिए, अब ये AR की जरूरत क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये जरूरत जब एराइज होती है कि अगर सपोज करिए आपकी कंपनी CIRP प्रोसेस में है, तो COC अपॉइंट करती है, COC में काफी मेंबर्स हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो सबको रिप्रेजेंट करेगा, हम उसको अपॉइंट कर देते हैं। इसमें भी फीस है, काफी अच्छी फीस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी IBC कोड में दी हुई है कि उससे कम तो दे ही नहीं सकते। तो बेसिकली जो एक तो स्कोप हमारा आ गया कि एक जब आया, जब कोई का ऑर्डर आता है, NCLT का ऑर्डर भी आता है, तो NCLT के ऑर्डर में भी ये रहता है कि इतनी फीस इस IRP को देनी है, मतलब इतना अमाउंट अभी पे करना है इनिशियली। तो बेसिकली फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फीस तो हमारी रिकवर हो ही जानी है, वो कोर्ट से हो जाएगी। तो उसमें एक स्कोप ये है कि अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो सकती है IBC में। अब उसमें हम अब AR हमें अपॉइंट करना है विद इन 2 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ द वेरिफिकेशन। जब हमारे पास आता है कोई एप्लीकेशन कि AR अपॉइंट करिए, तो वो हमें अपॉइंट करना है विद इन 23 डेज हो गए, यानी T का मतलब जिस दिन से कमेंसमेंट हुआ वो 23 डेज में एप्लीकेशन आ गई अपॉइंटमेंट की, AR की। अब हमने रिपोर्ट सर्टिफाई कर ली कि सपोज करिए आपके पास 4 क्लेम आए, तो उन 4 में से आपने कितने एडमिट किए, कितने वेरीफाई किए, कितने नॉन वेरीफाई किए, उसके हिसाब से आपने एक COC बना ली, एक कंस्टिट्यूशन कर ली एक कमेटी को, और जो COC की कमेटी हो गई, और ये विद इन 23 डेज में आपको कंस्टिट्यूट करनी है। अब क्या करना है आपको? एक मीटिंग दिखानी होगी। आपने कंस्टिट्यूट तो कर दी, अभी तो आप IRP ही बने थे, जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उससे आप सिर्फ और सिर्फ IRP अपॉइंट हुए थे। लेकिन जब COC आप कंस्टिट्यूट करोगे, तो COC को ही पावर आएगी कि आपको वो RP अपॉइंट कर पाए, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है, अगर COC को लगता है कि RP हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या RP से नहीं हो पा रहा है कोई काम हैंडल, तो वो क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं, वो किसी और को ले आते हैं। तो हमें बेसिकली क्या है कि अगर IRP बन गए हैं, तो RP बनने के लिए एक COC कंस्टिट्यूट होगी और COC ही अप्रूव करेगी कि हम एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनेंगे या नहीं बनेंगे इस केस में। तो IRP जब तक RP की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे जब तक कि RP अपॉइंट नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद में हमें 7 डेज में अपॉइंटमेंट करना होगा एक वैल्यूअर का, जो
आपको पता है कि वैल्यूएशन करानी होती है सारी प्रॉपर्टीज की। मान लीजिए आपके पास आज की डेट में आ गई प्रॉपर्टी, तो आपको वैल्यूएशन भी करानी होगी। तो ये टाइमलाइंस हैं, कुछ कुछ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ तो अभी इस सेशन में नहीं समझ आएगा। तो ये टाइमलाइंस हैं जो कि सीआईआरपी के हिसाब से है। अब सपोज करिए कंपनी चली गई आपकी, आपको सीआईआरपी में लेके जाना है, एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर है आप, और आपको चाहिए कि आप इस कंपनी को एज अ उसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल कर सकें। तो आप कैसे जाएंगे? आपको एक फॉर्म 1 है जो प्रिस्क्राइब्ड है आईबीसी कोड में, आपको यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करना होगा, और उसके साथ साथ आपको एक कंसेंट लेनी होगी। जो मैंने आपको बताया ना कि विदाउट कंसेंट आप, जो आईआरपी की एक कंसेंट मैंडेटरी है इस पिटीशन को इनिशिएट करने के लिए, तो आपकी कंसेंट लगेगी वहां पे। तो आप वो कंसेंट देंगे, इनकी पिटीशन होगी, उसके साथ में फाइलिंग फीस होगी, तब आप जो फॉर्म 1 है वो आप फाइल करेंगे, मतलब फॉर्म 1 में पिटीशन जाएगी कोर्ट में। अब कोर्ट क्या है, बहुत से केसेस में होता है कि नहीं एडमिट करता है पिटीशन, वो एनसीएलटी तक भी केसेस गए हैं। तो वो कोर्ट को पावर है कि वो एडमिट करेंगे पिटीशन को या नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गई फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात। अब हम चलें कि अगर हमें एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो अब हम क्या करेंगे? तो अगर हम ऑपरेशनल क्रेडिटर है और हमें किसी के अगेंस्ट में हमारे ड्यूज बनते हैं और हमें उससे लेने हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक फॉर्म 3 है जिसमें हमें उनको डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा, और इस डिमांड नोटिस के साथ साथ एक इनवॉइस का भी पूरा अटैचमेंट जाएगा कि ये इनवॉइसेस हैं, ये पेमेंट बनता है, इसके रिगार्डिंग ये इसके प्रूफ्स हैं। तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर जब फाइल करेंगे, और उसके बाद में जब वो विद इन 10 डेज में अगर उसको रिप्लाई नहीं करेंगे उस डिमांड नोटिस का, तो उसके बाद में फॉर्म 5 में जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो एक सीआईआरपी प्रोसेस पिटीशन फाइल करेंगे। तो जो सीआईआरपी में जो पिटीशन फाइल होगी, अभी तो मान लीजिए आईआरपी की इसमें लगी नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि कंसेंट उसके साथ में जानी चाहिए, बट लेकिन जब वो एडमिट हो जाएगी पिटीशन आपकी, तो उसके बाद में जो या तो कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, या आपको एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर अपना कोई आईआरपी या आरपी चुन सकते हैं जो कि आपके केस में अपॉइंट होगा। तो बेसिकली ये कुछ फॉर्म्स हैं जो कि हमें एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर या एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर कोई पिटीशन फाइल करनी है, उसकी क्या फीस है, तो उसके साथ में हमें ये इनिशिएट करना होता है कि हम एक सीआईआरपी प्रोसेस इनिशिएट कर लें। अब जब सीआईआरपी प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, तो एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बाद सबसे पहले आईआरपी अपॉइंट हो गए, हमने कंस्टिट्यूट कर दी एक कमिटी, हमारे पास क्लेम आया, हम हमने सारे क्लेम्स सारे इकट्ठे किए, उसके बाद हमने उनको वेरीफाई किया। फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबसे पहले क्या करना है कि एक तो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट करे, उसके बाद एक आईएम भी बनाना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं जिसको। इसमें 54 डेज का टाइम दिया हुआ है कि आपको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है, और ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आपको क्या लिखना है, वो उसका पूरा सेक्शन एक कंपनी इसमें आईबीसी कोड में दिया हुआ है। तो आपका जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होना चाहिए वो उस पूरी सेक्शन के हिसाब से होना चाहिए, कि सेक्शन रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आईबीसी में क्या है, एक तो सेक्शंस हैं, तो सेक्शंस के हिसाब से तो हमें चलना ही है कि सेक्शन में ये कह रहा है। उसके अलावा रेगुलेशंस हैं, इसमें रूल्स है, रेगुलेशंस है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें रेगुलेशंस क्या फॉलो करने हैं। जैसे सीआईआरपी का रेगुलेशंस अलग है, लिक्विडेशंस के लिए रेगुलेशंस अलग हैं। तो सारे सारे जो जो स्टेजेस हैं सीआईआरपी की, उसके लिए हर तरीके से हर एक रेगुलेशंस अलग अलग है। तो हमें बेसिकली उसके हिसाब से एक आईएम बनाना होगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि आईआरपी की ड्यूटी है कि वो उसको कैसे बनाए। और जो सीआईआरपी प्रोसेस है उसको आपको कंप्लीट भी करना है 180 डेज में, और बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से चलना है। अगर आपका एक भी कंप्लाइंस इस केस में मिस होगा, तो आप ये मान के चलिए कि आईबीबीआई आपके ऊपर तुरंत पेनल्टी इम्पोज करता है। तो हमें, और एनसीएलटी भी कोई डायरेक्शन अगर उससे कोई जाए कि ये डायरेक्शन दीजिए कि आईआरपी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट में वहां भी
एक्शन इनिशिएट हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें जो करना है वो एकदम टाइमली करना है। अगर 7 डेज का टाइम है तो हमें 7 डेज में ही करना है, हमें उसके ऊपर नहीं जाना है। क्योंकि इसमें कोई भी ग्रांटेड कोई टाइम नहीं ले सकते, टेकिंग ग्रांटेड नहीं ले सकते किसी भी चीज को। एकदम टाइम बाउंड मैनर है ये, और एकदम टाइम बाउंड मैनर में हमें रिजोल्यूशन करके देना है कंपनी का। तो हमें पब्लिक अनाउंसमेंट करना है विद इन 3 डेज में, फॉर्म ए में करना है ये। और फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ IRP। और पब्लिक अनाउंसमेंट ये पब्लिश कहाँ करना है हमें, एक इंग्लिश, एक न्यूज़पेपर में करना है, और एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज में करना है। और वेबसाइट पे भी होना चाहिए ये कॉर्पोरेट डेटर की, और ये वेबसाइट पे होना चाहिए और इसके अलावा हमें IBBI को भी ये सबमिट करना पड़ता है जो हम पब्लिकेशन करा रहे हैं। तो ये सारा हमें करना है। अब चलिए कि फॉर्म्स की बात आती है कि हम IRP तो अपॉइंट हो गए किसी कंपनी में। अब कुछ कुछ फॉर्म्स आएंगे हमारे पास, कि जैसे फॉर्म बी आएगा, फॉर्म सी आएगा। तो फॉर्म बी आएगा हमारे पास, किसके लिए आएगा, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए आएगा, जो कि अदर देन वर्कमैन एंड एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय या वर्कमैन का नहीं होगा वो फॉर्म बी। वो फॉर्म बी जो सबमिट करेंगे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर सबमिट करेंगे। अब जब हमारे पास ये फॉर्म बी आया विद इन 14 डेज में, जो मैंने आपको बताया ऊपर, तो हमें वेरीफाई करना होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है जब हम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाते हैं और हमारे पास कोई कंपनी आती है, CIRP में चली जाती है, तो ये जो फॉर्म होता है वो गलत होता है। अगर आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं लेकिन आप अपना जो फॉर्म है वो किसी और फॉर्म में ही भेज देते हैं, फॉर्म सी में भेज देते हैं, फॉर्म CA में भेज देते हैं। तो इन फॉर्म्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो क्लेम अपना रेज कर रहे हैं और जो वेरीफाई कर रहे हैं। एज ए IRP भी अगर हम वेरीफाई कर रहे हैं किसी क्लेम को, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। तो बेसिकली फॉर्म बी जो है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए है, फॉर्म सी जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए है, और जो फॉर्म CA है वो ऐसे क्रेडिटर के लिए, मान लो आप देखते होंगे बहुत सारे केसेस हैं जो कि फ्लैट बायर्स के चल रहे हैं। और फ्लैट बायर्स के जो केसेस चल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए, पहले तो उसमें एक कंडीशन है कि 10% या 100%, विच एवर इज हायर, वो फ्लैट बायर ही जा सकते हैं IBC में। अगर ऐसे भी फ्लैट बायर हैं जो बाद में आ गए, जिनको नहीं पता था कि IBC इनिशिएट हो गया है, अब उन्हें अपना क्लेम लेके जाना है, IRPG को सबमिट करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे CA में, फॉर्म CA। दिस इज द क्लास ऑफ द क्रेडिटर, जो एक क्लास बना दी गई है कि इस कैटेगरी में आप अगर फॉल करते हैं, इस क्लास के क्रेडिटर हैं, तो आप इस फॉर्म में अपना क्लेम फॉर्म सबमिट करिए। उसके बाद एक फॉर्म डी है। अगर सपोज करिए हम वर्कमैन हैं, एम्प्लॉय हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो हम फॉर्म डी में अपना क्लेम सबमिट करेंगे। फॉर्म ई में अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है, सपोज करिए वर्कमैन है, एम्प्लॉय है हम कंपनी में, पर हम 100 लोग हैं, तो 100 लोग तो एक साथ अपीयर हो नहीं सकते, और मतलब अलग अलग फॉर्म्स भेजने पड़ेंगे। तो वो 100 लोग मिलके एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपना अपॉइंट कर लेते हैं। और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी आप ये ध्यान रखिए कि वो भी IP प्रोफेशनल ही होना चाहिए। वो भी कोई CA CS या CWA या कोई एनी अदर प्रोफेशन से नहीं हो सकते। वो भी होंगे तो IP प्रोफेशनल्स ही होंगे। तो बेसिकली ये फॉर्म ई की रिक्वायरमेंट आ गई। फॉर्म F, अगर किसी और तरीके के कैटेगरी के जहाँ पे क्रेडिटर हैं जो इन सारी कैटेगरीज में नहीं आते, तो वो फॉर्म F के थ्रू जाएंगे। तो बेसिकली मैंने आपको एक मोटा मोटी सारा ब्रीफ कर दिया कि क्या है IBC, और कैसे इसमें जो है सारे मतलब एक कैसे कैसे हमारे लिए स्कोप है, एज अ IRP RP या लिक्विडेटर हम अपॉइंट हो सकते हैं। और बहुत वाइड एरिया है। और अगर ये पार्ट 3 जिस दिन से एप्लीकेबल हो गया, जहाँ इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फर्म को लेके आ गए, या पार्टनरशिप फर्म को, तो उस टाइम पे तो मतलब एक रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो बेसिकली मेरा ये ब्रीफ था आज के लिए। और अगर अभी मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि जो सर है राजेश सर, वो आगे आपको बताएं कि इसमें आगे क्या कैसे बन सकते हैं आप। थैंक यू सो मच राजेश। जी मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से एलेबोरेट किया सारा आईबीसी। जिसने पास करना हो, अगर आपका लेक्चर सुन लिया तो बड़े आराम से उसको ओवरव्यू मिल गया। थैंक यू। तो एंड दिस वाज वंडरफुल
सेशन कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपने बड़ा सरल भाषा में, ताकि हर कोई समझ सके, Yes. बड़ा सिंप्लीफाई करके बताया. एंड दो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, you made it simplified. Thank you. So Thank it you was a so wonderful much. session, Sucheta. Thank you. जैकी सर, एक बार ही क्वेश्चन आंसर देख लें, कोई मैम से पूछने हैं, और चैट बॉक्स में हाँ जी। क्रॉस चेक कर लीजिए एंड आस्क टू द मेंबर्स इफ दे हैव एनी क्वेरी, तो दे कैन आस्क फ्रॉम मैडम, अदरवाइज उसके बाद फिर मैम चले जाएंगे, फिर राजेश जी इसको कंटिन्यू करेंगे. जी one doubt is there, ma'am. So Yes. I'm just reading it for you. When financial creditor approaches IBC for recovery of dues, can the company defend itself by informing that we have not received any intimation from the financial creditor regarding intention to approach IBC and creditor? नो सर, बहुत बार ऐसा हुआ है. क्योंकि इंटीमेशन नहीं, उसको एक कॉपी तो हमें सर्व करनी होती है एज अ काउंसिल. अगर एज अ पिटीशन कोई भी फाइल कर रहा है तो उसको एक कंपनी को सबसे पहले एक कॉपी ऑलरेडी सर्व करनी है. तो उस ग्राउंड पे भी ये होता है कि जब आईबीसी में हम कोई पिटीशन लेके जाते हैं तो हाल की हाल एडमिट नहीं होता है केस. ऑन द सेम डे एडमिट नहीं होता है, उसमें 2-3 हियरिंग के बाद ही एडमिट होता है वो केस. तो ये तो हम कह नहीं सकते कि हमें पता नहीं है उस केस के हमारे अगेंस्ट में कोई आईबीसी हो गई है स्टार्ट. तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी बहुत बार पास हुए हैं आईबीसी में. Okay. Yeah, one more question is there. When financial creditor approaches IBC, is he required to submit supporting documents to IBC to inform that he has communicated several times with company for payment of dues, but dues not paid till date, due to which application has been made in IBC? नो सर, ये वो उसमें आईबीबीआई को कोई पावर ही नहीं है सर. आईबीबीआई अगर आप भले ही उनको इंटीमेट कर दोगे, पर लेकिन एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर आप क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट करवाना चाहूंगी, सॉरी. जी मैं दोबारा आपके When financial creditor approaches IBC, is he required to submit supporting documents to IBC to inform that he has communicated several times with company for यार payment of the नहीं dues? नहीं, ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बट आईबीसी को हमें एक फॉर्म ए है जिसमें हमें एक पिटीशन की कॉपी है. मान लीजिए हमने कोई पिटीशन आज ड्राफ्ट करी और एज ए आईआरपी हमने कंसेंट भी ले ली, तो वो पूरी पिटीशन की कॉपी जो एनसीएलटी में फाइल होगी वो सेम कॉपी हमें आईबीबीआई को सबमिट करनी है. And one question is how to complete the course timely? कोर्स इज द आईबीसी कोर्स. Yeah. That I will delve upon that. सर Yeah. Okay. So Rajesh That is ji will second. take up this in the next session. Another. थैंक यू. Thank you, Sucheta ji, for your wonderful deliberation for the participants. And now I invite Sanjeev ji to present. Just a second. Sucheta ji, are you there? Yes, I am there. Yes. Yeah. Yeah, I invite Sanjeev ji to present mementos to Sucheta ji as a certificate of appreciation. So please. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am, for your deliberation. Now we have CA Rajesh Dhawanji with us for the deliberation. So I welcome you, Rajesh ji. And now I would like to say something about the Rajesh ji, about the brief description. So CA Rajesh Dhawanji is a seasoned finance professional with a robust background in both educational qualifications and professional expertise.
He has successfully qualified as CA in 1992 and is a practicing chartered accountant with the firm name Rajesh Dhawan and Associates. He has been associated with numerous assignments under insolvency and bankruptcy code, being appointed as liquidator for various companies. He also has had the honor of serving as a faculty member at the Amritsar branch of the NIRC of ICAI. So, Rajesh ji, please put your valuable things for Thank you, our sir. members. Thank you, Jackie ji, and thank you, Chairman NIRC and Mr. Jagjit Singh ji, for inviting me to address at this elite forum. So I would like to start right now. First of all, I will thank CS Cheta ji. So she has, I have already put that she has given lecture putting Sagar in Gagar. So she has summarized beautifully the vast area of IBC. So everybody have first hand information of IBC. So now I would like to share my screen. Mm. So uh, this is visible. My screen Yes, sir, is it's Yes, visible. sir. visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. I'm audible, na? Yes, perfectly fine. Okay. So I'll start this session. How to become IBC professional. So first of all, as Madam has already deliberated, there are four pillars of IBC major. First is IBBI, which regulates the professions, and second one is insolvency professionals and IPAs, then information utilities and adjudicating authorities, which is NCLT and NCLAT. So the first pillar of the IBC's institutional infrastructure is insolvency professionals. And IP is one of the most important components of the IBC ecosystem. And IP is a regulated and licensed professional responsible for managing and overseeing the CIRP and or the liquidation process of the CD. CD is corporate data and resolution and bankruptcy process for partnerships and individuals, which has not till date been notified. IPs form a crucial pillar on which the entire edifice of the IBC process rests. The IBC gives various powers to the IPs while subjecting them to regulatory and judicial oversight. So the first level of regulatory oversight of an IP is provided by insolvency professional agency with which the IP is registered.
So this is just introduction of IBC and just background of impact of IBC. Though the IBC has resolved 891 cases of defaults involving bank loans worth 10 lakh crore till December 23. The resolution of these cases led to the recovery of 3.2 lakh crore, or 32% of the admitted claims by banks and financial institutions. During the same time, 2,376 defaulting companies were ordered to be liquidated. So under IBC, there are two processes. One is a resolution and another is liquidation. So resolution means acquisition of an insolvent company by another as a going concern. So main thrust of the government is to revive the company so that the economy grows. In case when the resolution process fails to find a buyer for the company, it is liquidated, where assets of the company are sold to recover money by the creditors. So while the recovery rate of IBC is poor, when compared to the total admitted claims of the banks, experts have pointed out that the new insolvency regime has instilled fear among willful defaulters, resulting in thousands of cases being resolved even before reaching the NCLT. So according to IBBI's report, 27,500 applications for invitation of CIRP against companies involving defaults of 9.7 lakh crore were withdrawn before admission. So in this case, I would like to quote my own example. When you send notice for uh, invoking and initiating CIRP to a company which is otherwise liquid or either otherwise solvent, so no company would like to go to IBC and would repay the loan immediately. So that is a very good recovery tool for companies. So here are the statistics. So as of today, I have checked in the morning. So total number of registered IPs with IBBA are, as on today, are 4,404 only. And out of that, AF is like in CA we have COP, Certificate of Practice, here authorization for assignments. So only 2,149 are practicing IPs, which can handle or take up assignments in India. And otherwise, and the balance are maybe have taken up the membership for academic purpose or are doing jobs with other IPs or other companies. And out of the IPs are IPPI promoted by ICAI has the maximum number of members, 2,746. So more than 60% is are registered with IIP ICAI. So first of all, now I will explain the law definition of insolvency professional as per IBC code 2016 subsection 19 of section 2. Insolvency professional means a person enrolled under section 206 with an insolvency professional agency as its member and registered with the board as an insolvency professional under section 207. And subsection 20 defines the insolvency professional agency means any person registered with the board under section 201 as an insolvency professional agency. So there, as of today, there are only 3 IPAs. All 3 are promoted. One is promoted by our own ICAI, another one is by ICSI, and third one is from Cost and Management Accountant, Indian Insolvency Professional Agency of Institute of Cost Accountants of India.
So as I have already explained, the maximum members are with uh, IP of ICAI. So insolvency professionals, chapter 4 of IBC Act deals with the insolvency professionals. So section 206 says no person shall render his services as insolvency professional under this code without being enrolled as a member of an insolvency professional agency and registered with the board. So to be a member, you have to register with IPA and also board. And for registration of insolvency professional, every insolvency professional shall, after obtaining the membership of any insolvency professional agency, register himself with the board within such time, in such manner, and on payment of such fee as may be specified by the regulations. So regulations, I will talk about later on. The board may specify the categories of professionals or persons possessing such qualifications and experience in the field of finance, law, management, insolvency, or such other field as it deems fit. So now I will come to Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Professionals Regulation 2016, which regulates the passing of exam and qualification as IP. So chapter 2 of these regulations, chapter 1 is of definitions, section 2. So section 3, I'm starting with the main topic, insolvency examinations. So as per section regulation 3, the board shall either on its own or through a designated agency conduct a national insolvency examination in such a manner at such frequency as may be specified to test the knowledge and practical skills of individuals in the area of insolvency, bankruptcy, and allied subjects. The board shall either on its own or through designated agency conduct a limited insolvency examination to test the knowledge and application of knowledge of individuals in the area of insolvency, bankruptcy, and allied subjects. The syllabus, format, qualifying marks, and frequency of the limited insolvency examination, which is has short form LIE. It is referred as LIE exams. Shall be published on the website of the board at least 3 months before the examination. So, who is eligible to become insolvency professional? So, Regulation 4 says no individual shall be eligible to be registered as an insolvency professional if he is a minor, he is not a person of resident in India. So non-residents are not allowed to become insolvency professional, does not have the qualification and experience specified in Regulation 5. Regulation 9 has become redundant. As of now, Regulation 5 is only applicable and has been convicted by any competent court for an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months or for an offense involving moral turpitude and a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of the sentence, provided that if a person has been convicted of any offense and sentenced in respect of thereof to imprisonment for a period of 7 years or more, he shall not be eligible to be registered. So there should not be any criminal record. And he is an undischarged insolvent or has applied to be adjudicated as so insolvent person cannot become insolvency professional. He has been declared to be of unsound mind or he is not fit and proper person. So for determining whether individual is fit and person, the board may take account of any consideration as it deems fit, including but not limited to the following criteria. That means says integrity, reputation, and character, absence of convictions and restraint orders,
and competence, including financial solvency and net worth. So, person of good standing and having qualified exam, only that can be become an insolvency professional. So then comes the qualification and experience. So how to qualify IP exams? So subject to other provisions of these regulations, an individual shall be eligible for registration if he has passed the limited insolvency examination within 12 months before the date of his application for enrollment with the insolvency professional agency. That means within a passing of LIE, within 12 months, you have to enroll with the insolvency professional agency. Otherwise, that your result will lapse. You will have to take another exam again, and has completed a pre-registration course within 12 months from the date of the payment of non-refundable application fee under Regulation 6, as may be required by the board from an insolvency professional agency after his enrollment as a professional member. So this is 50 hours course, educational course, training, practical training has to be done under the guidance program of IPA, of which he is a member after getting registration with the IPA. Then he has successfully completed the National Insolvency Program as may be approved by the board, successfully completed the graduate insolvency program as may be approved by the board, or these are exclusive ones. You need not have to take up all the exams. So this is either of this. And number 3 is experience of 10 years in the field of law after receiving a bachelor's degree in law, or 10 years in management after receiving a master's degree in management, or 2-year full-time postgraduate diploma in management, or 15 years in management after receiving a bachelor's degree from a university recognized by law, or an institute approved by All India Council of Technical Education, or 10 years of experience as CA, or a company secretary, or a cost accountant, or advocate enrolled with the Bar Council of India. So for this purpose, regulation only professional and managerial experience shall be considered for the purpose of computing the total experience of 10 or 15 years under clause 3. There shall be included experience for a period under subclause 4. Illustration is given below. So I will explain the same. So as the total experience of 10 years under subclause 4, there shall be included experience of any period under any of that subclause. So that means illustration 1 has been given in the regulation where an individual has experience of 9 years under subclause 3. That means not qualified as a CA, company secretary, or cost accountant, or advocate, and experience of 6 years in under clause 4. That means as a CA, company secretary, or cost accountant, or advocate, he shall be considered having experience of 15 years for the purpose of clause 3. And illustration 2 experience where an individual has 6 years under item A, say as a CA, and experience of 4 years under D as an advocate. So he shall be considered as having total experience of 10 years for the purpose of this subclause 4. So application for certificate of registration.
An individual enrolled with the Insolvency Professional Agency as a professional member may make an application to the board through Insolvency Professional Agency of which he is a member in Part 2 of Form A of the second schedule to this regulation, along with a non-refundable application fee of 20,000 rupees to the board. An insolvency professional entity I will speak, we will restrict our deliberation to IP only. Then the so IPA shall acknowledge an application made under this regulation within 7 days. The Insolvency Professional Agency shall verify and forward the application to the board within 30 days from the date of the payment of fee under sub-regulation 1 or 1A, as the case may be, excluding the time given by IPA to the professional member for submitting additional documents under or clarification, as the case may be. The board may require the applicant to submit within reasonable time additional documents if any required. The board may require the applicant to appear within a reasonable time before the board in person or through its authorized representative for clarification required for processing the application. Usually it is not done. If your documents are okay, the registration is granted forthwith. So certificate of registration. So if the board is satisfied after such inspection of inquiry or as it deems fit that the applicant is eligible under these regulations, it may grant a certificate of registration to the applicant to carry on the activities of insolvency professional in Form B of the second schedule to these regulations within 30 days of the receipt of the application, excluding the time given by the board for presenting additional documents, information, or clarification, or appearing in person, as the case may be. The registration shall be subject to the conditions that the insolvency professional shall at all times abide by the code, rules, regulations, guidelines thereunder, and the bylaws of the insolvency professional agency with which he is enrolled. At all times continue the satisfy the requirement under regulation 4, that is basic qualification of becoming IP, undergo continue professional education like CPERs are applicable in RCA profession. Here also 20 hours of CPERs are mandatory in a calendar year, and not outsource any of its duties, responsibility under the code except those specifically permitted by the board, and pay to the board a fee of 20,000 in case of insolvency professional every 5 years, after which the certificate is granted, and such fees shall be paid on or before the 30th April of the year it falls due. So this is example, just like when registration is granted on 2nd Feb in 21-22, the fee shall become due on 1st April 27 after 5 years. So and it shall be paid on 30th April 27. And there is another fee payable to the board, pay to the board a fee calculated at the rate of 1% of the professional fee earned for the services rendered by it as an insolvency professional in the preceding financial year on or before 30th April every year, along with a statement in Form E of the second schedule, in which all the assignments and fees recovered is given in that form. So in 1920 and 21, due to COVID years, the date was extended. These are provisions to that. I will not touch upon that. So additional conditions: not render services as insolvency professional unless he becomes a partner or director of insolvency professional entity recognized by the board if he is not citizen of India. So take prior permission of the board for shifting its
IPA from one IPA to another. So you can shift to one IPA to another after receiving no objection from both the concerned IPA to which you are shifting and from which you are shifting. So I would like to insert here that there is no bar that CA should must be registered with IPA of CA only, or CS should register with the IP of CS only. So they can register with any IPA, like CS can register with IP of promoted by the ICAI, and its CA can, and vice versa. CA can also register with the IPA promoted by the cost accountants body. Then take adequate steps for redressal of grievances, if any raised. Maintain records of all assignments under the code at least 3 years from the completion of such assignment. Abide by the code of conduct specified in first schedule to these regulations. In case an IPE, so I am not touching IPE, abide by such other condition as may be imposed by the board. So these conditions you have to comply with to continue as IP, to get to register and continue. Then I already explained, AFA, which is equivalent to certificate of practice in CA profession. And insolvency profession shall not accept or undertake an assignment after 31st December 2019. It was a date when it was introduced, unless it holds a valid authorization for assignment on the date of such acceptance or commencement of such assignment, as the case may be, provided that provision of this regulation shall not apply to assignment which an insolvency professional is undertaking as on, like he's taken up before 31st December 2019, or the date of the authorization expiry, it is expiring on like today. He can take up today, but not after today. So this is insolvency professional entities. This is another, we form CA firms. So in IBBA also permitted to form insolvency professional entities. So I will just touch this section. And it can be a company, a registered partnership firm, or a limited liability partnership may be recognized an IPE. So IPE can also take up the assignment of any assignment under IBC. So if its objective is to provide services to insolvency professional or to carry on the activities of an insolvency professional, or both, it has an net worth of not less than 1 crore rupees. Majority of its equity shares and voting rights are held by insolvency professional who are its directors. In case of it's a company, majority of capital contribution is made by insolvency professionals who are its partners. In case it is a limited liability partnership or a registered partnership, so partnership has to be registered one. Non-registered partnership cannot be recognized as an IP. Majority of its partners or directors, as the case may be, are insolvency professionals. So that means the minority can be non-insolvency professional or other professionals also. Majority of its whole-time directors are insolvency professional. In case of a company, none of the partners or directors of a is a partner or director of another insolvency professional. So one partner or director cannot be partner of two IPs. Provided that the insolvency professional entity is recognized before the date of the commencement of insolvency professional, and Bankruptcy Board of India Insolvency Professional Second Amendment Regulations 21 shall comply with the provisions of clause B and C on or before 31st December 2021, because they were introduced on that date. So it is not retrospective amendment, but the IPs made before, registered, recognized before that, have to comply with these regulations.
So for the purpose of net worth has been defined as per Companies Act, and sum of partners' contribution, the capital contribution, and their undistributed profits net of accumulators, if any, in case of registered partnership firm or limited liability partnership. So this is the process of registration of IPs. So I will skip this. So now I will come to the exam part of this is always how to become, like our core subject is today is how to become IBC. So first we have uh, gone into the legal part, regulations part, act part. Now we will come to the syllabus of the exam part. So IBBI publishes the syllabus and details of the LIE. So one of the route to become insolvency professional, IBC professional. One is limited insolvency examination, and another one is postgraduate program. So limited insolvency examination for who can take up limited examination become IBC professional through LIA only because the persons who have experience, as I have explained earlier, 10 years or 15 years experience depending upon his qualification. So what is the syllabus? So syllabus is like the IBC code weightage is 4%. Then all regulations, rules and regulations under the code have 6%. Then various business laws, because IBC professional has to be conversant with all laws because he has to run the company as a IP. So he should be conversant with all business and commercial laws, like business laws, company chapter 3, prospectus and allotment, and chapter 5, acceptance of deposits by companies, chapter 7, management and administration chapter, accounts of the company, compromises, arrangements, amalgamation, and registered valuers, removal of name of the companies, winding up, NCLT, NCLAT, special courts, miscellaneous. So these chapters will be appearing as questions in your exam. Then there is Partnership Act, Limited Liability Partnership Act, Indian Contract Act, voidable contracts, void section 10 to 30. So specific sections are given from which the questions will come. Contingent contracts, section 31 to 36, performance of contract 37 to 61, novation, rescission, and alteration of contract 62 to 67, consequences of breach of contract 73 to 75, and contracts of indemnity and guarantee and sureties rights section 124 to 127, bailment and pledge section 148 to 181, agency sections 182 to 238. Then Sale of Goods Act 1930. So all these business laws will constitute 4% weightage for the exams. Then comes the general laws, which will have 7% weightage. So these include Negotiable Instrument Act, the Transfer of Property Act, Civil Code, Limitation Act, Prevention of Corruption Act, then PMLA, Recovery of Debts and Bankruptcy Arbitration Conciliation Act, SURFACE Act, MSME Act, REDA, Real Estate Regulation and Development Act, Securities Contract, then Security and Exchange Board of India regulations and disclosures, EPF and miscellaneous provisions. So this will have 7% weightage in the exams.
Then comes the finance and accounts. So corporate finance, financial analysis, liquidity management, tax planning, and GST. This will have just 2% weightage. As a IBC professional, you can also employ or other professionals to take up the assignment, but you have to have overview of all these sections. Then general awareness has also weightage of 2%. General awareness means Constitution of India, rights to constitutional remedies, principles of union judiciary, provisions of high courts in the states, principles of natural justice, rights of workmen under labor laws, basic principles of economics, financial markets, basic concepts of valuation, forensic audit. Then comes the case laws, important decisions of Supreme Court and High Courts, decisions of NCLAT and NCLT relating to corporate insolvency resolution, corporate liquidation, voluntary liquidation, and fast track resolution process. There will be 5 questions carrying 1 mark each. List of cases is also given in the annexure to the syllabus that is available on the site. Then comes the major weightage of 70%, that is case studies. So it is not like cramming of these sections. You had to have deep knowledge of cases and how to apply the laws and how to analyze the judgments and statute. So there will be a case study on corporate insolvency resolution process and liquidation process. So 10 questions of 2 marks each. Case study on CIRP process liquidation. Then pre-packaged resolution, insolvency resolution. Then individual insolvency resolution and bankruptcy, business and general laws, and case study of business and professional ethics. So these are breakup of 70 marks and total is 100. So whatever any law, act of parliament, or any rule regulation is referred to in the syllabus, the same shall be taken as in force as on 31st March 23. This means that any amendment in such laws, acts, or rules affected after 31st March 23 shall be ignored. But by the time we take up the exam in say 24, then it will be substituted in new syllabus as 31st March 24. So all the laws and rules, regulations, and are as in force on closing of the financial year is usually taken as applicable for the exams. So the exam is conducted online, computer based in a proctored environment with objective multiple choice questions. The exam center are available at various locations across the country. The exam is available on every working day. You can schedule it. A candidate is expected to thoroughly read the relevant FAQs on LIE placed on IBBA website before registering, enrolling for the exam. A candidate may choose the time, the date, and the examination center of its choice for taking the exams. For this purpose, he needs to enroll and register on the IBBA site. A fees of rupees 5,000 plus GST, that is 5,900, is currently applicable on every enrollment for the exams. So I have taken up some FAQs for your information. How do I take the limited insolvency examination? You need to be sure as to why you wish to take the exam. If you wish to be an insolvency professional, please satisfy yourself that you are eligible for the same. Like you have the experience of 10 years or 15 years, as the case may be. If you wish to apply for the job for which requires a pass in the examination, please satisfy yourself that you are eligible for the job.
For the job, you need not be in insolvency examination. If there is some requirement of passing out limited insolvency examination, you can take up the exam. Thereafter, you need to go through the following 3 stages, following instruction given on the computer screen at every stage. So, registration, you can register on the IBBA website, and you will be taken to NSEIT's candidate registration. It is the agency notified by the IBBI to take up the exams. It is outsourced to this NSEIT for exams. Then provide your particulars, email address, identity address, set a password, upload photo, PAN card, then submit the form online. You will receive an activation link on the registered email address. No fee is payable for registration. This is one-time registration, and you will be provided with login credentials, that is user ID and password. Thereafter, access the examination system with these credentials and manage all future activities like enrollment, slot selection, fee payment. Every candidate is requested to create a single user ID only and use the same. So, in order to enroll for a particular examination time slot, visit this site. Then again, after logging in, book seat tab, these are procedures given. I think everybody is tech savvy and can do it easily. And payment has to be made online only. And you will get online admit card from the link candidate dashboard. So when you go to take the exam, so then you will take a printout of the card, original, any of your ID proof, PAN card, Aadhaar card, passport, and reach there before time. And then, so in case, unluckily, if you do not pass the exam and wish to take the exam again, you need to repeat all the process, stage 2 and 3. But there should be a payment. It will be activity 24 hours after the expiry of the earlier examination slot. And examination, as I already, when our examination held, you can take up examination on any day, subject to availability of slot under your preferred center. And fee payable, I have already explained, 5,900. So how many times can I take the exam? You can appear for the exam any number of times naturally by paying 5,900 every time till you clear the exam. However, there shall be cooling off period of 2 months between each consecutive attempts of such candidate, thereby making a total of 6 attempts maximum in a period of 12 months. So all this syllabus, vast syllabus, is covered by e-learning management system. I had also gone through that and subscribed to the e-learning management system for limited insolvency examination available on the website of IIICAI. So that is available just for 590 rupees. 6 months subscription is there. So all the topics to be included in the exams are covered in this e-learning process, like IBC regulations, introduction, corporate CIRP process, liquidation. These are various chapters, IBC regulations and resolution and bankruptcy for individual and partnership. Then resolution mechanism for financial service provider, important court and IBBI orders, Indian Contract Act, other commercial laws, Limitation Act, and other securitization laws, Companies Act, which are the sections applicable to the exam, corporate finance and constitutional remedies. And there are final mock tests.
So these have been beautifully designed e-learning platform and available at a very economical rate. So you can go through that and give a mock test of each topic, and till you gain the confidence that you can now appear in the exam. So then you can book the slot and give the exams. So this is I will just share with you. Uh, these are just examples of the I have downloaded when I took the exam. So these are slides like are given for each chapter in the e-learning process. So, and there are also recorded lectures and mock tests. These are very informative and lucid and exhaustive. So this is just an example. So this is all for limited insolvency examination. Now comes the second route to become IBC professional, which is for the youngsters who do not have experience of 10 years as a CA. Then they are not eligible to become IBC professional through this route. For that, there is another initiative recognized by IBBI is postgraduate insolvency program. This is has been conducted by Indian Institute of Corporate Affairs, which is a prestigious institute at Manesar, NCR area in Gurgaon. So this is full-time residential course. Newly qualified chartered accountants can take up this course, though this is like costly one, but placements are very good. So like for this year, for PGP course, there were registration closed on for this year, April 27, and there are entrance tests, and commencement of classes is July 1, 2024. This is 2 years course. So I will elaborate on this course. So this postgraduate insolvency program is the first of its kind program for those aspiring to take up discipline of insolvency professional as a career or seeking to take up other roles in the value chain in India and in foreign jurisdiction. A student who completes the PGIP will be eligible for registration as insolvency professional under Insolvency and Bankruptcy Code without having to wait to acquire the 10-year experience as required by the code at present. So for those who aspiring to become in-house counsels or serve as advisors to stakeholders and insolvency, liquidation, bankruptcy, turnaround processes, the PGIP will benefit at entry level and in career growth. The PGIP will also be a great value to those who elect to become insolvency or restructuring professionals or join academics or research in the field of insolvency. So these are another areas for our fellow professionals, young professionals, who otherwise are usually, I think, taking up additional courses for upgradation of their skills. So this is also one of the finest course, I think, newly professionals, chartered accountants can take up, and there is huge
huge potential. So, an insolvency profession serving as a licensed practitioner or in any other capacity needs not only the domain knowledge but also range of skills, multiple abilities, and extraordinary qualities. It also needs a fair degree of appreciation of culture, socials, and other factors surrounding an insolvency proceeding, because you have to run the company, you have to lead a team of the company as top management. And insolvency professional also has ethics and moral obligations. The PJP offers all that the market expects from a high quality insolvency professional. A student can also start earning in the second year, because 1 year is classroom study, another year is internship, and internship is usually at a very good companies or MNC and like consultants. So residential classroom program is first is the preparatory phase, when students with a strong base of knowledge will enable them to adapt to changing conditions, including the dynamic insolvency and bankruptcy regime in India. Then there is specialized phase. Uh, then specialized subjects would impart a deep understanding of the code and its evolution, along with the legal framework within which insolvency professionals are required to operate. Then there is personality development. The personality development phase focuses on developing all-round personality of the students. Some of these aspects covered are leadership, problem solver, data analysis, consensus building, and negotiation, communications, writing skills. So there are vast skills that are imparted. Then program structure is like there are 3 trimesters quarterly: July to September, October to December, January to March, and 12 weeks is the duration, 722 hours each. And internships are also April to December, then January to March, and April to last trimester is after training, two internships. So total duration is 24 months and 96 weeks. An intensive residential classroom program of 12 months, 48 weeks, and hands-on internship program at the cutting edge of the practice for 12 months, 48 weeks. So this course is like covers both residential, theoretical, and practical aspects of the insolvency course. So teaching modules are a fine mix of theory and practice to be delivered by tutors and experts. Students will be assigned mentors. Mentors will be available to a large batch of students, like it is in the ratio of 1:10. So role of mentors would be to serve as a guide at the macro or visionary level. So these are different aspects to be covered: teaching assistants, then case studies, the talk series, week with the legends. They will introduce you with some legends, offsites, seminars, workshops, and roundtables. So this is an extensive course covering your personality development and your professional qualification, enhancing your book reviews, mock competitions, and projects and tasks, and then finally assessments. These are focus of learning.
So everything, all aspects of your personality development and academic aspects are covered in this. So for this, who can apply? So qualification is like is CA, advocate, cost accountant, company secretary, BE or BTech, or postgraduate with major subjects in economics, finance, commerce, management, and insolvency with aggregate 50% marks. There is no requirement of any experience. So this is the difference between LIE and this course. There is no requirement of any experience, but age should not be more than 28 years as on the date of their registration. So application can be submitted online with the application fee of 3,000, and their reservation policy is also applicable here. So this is the syllabus. Syllabus is like number of questions and maximum marks. So descriptive test is only for 15 marks, and rest of 85 is of objective type questions. And medium is only English. So total duration of the test, and this is, I'm talking of entrance test. So total is 90 minutes, out of which 70 minutes will be available for objective type and 20 minutes for the descriptive test. And a maximum batch is of 52 students only. So this is the limitation. They have the limited sheets, and out of that also the reservation is also there. So one has to keep in mind going for this. So this is the uh, fee structure. So tuition and other charges are 9,64,000 and residence charges 385. So total course fee is 13,50,000 for 2 years. Looks like uh, very expensive, but keeping in view the future, I think people are spending more on MBA courses. This is more lucrative than MBA course, and placements are good. These are has to be paid in installments only, and SBI is giving 100% loan for these if you are selected. And in the second year, you also start earning, because internship you get the your salary. So this is the seat distribution according to reservation status. So out of 52, 18 are unreserved only, and all otherwise SC, ST, PWD, and OBC non-creamy EWS quotas are there. But if this is seats conversion is also there. If the candidates are not available for the reserved category, these goes to the unreserved category. So all 52 seats they have to fill up. If they don't find in the categories, they do not pass out. So these can go to unreserved category. So there has been 100% placement. So highest package being 34 lakh for the first year, and average package is 16 lakh. So these are recruiters, big names: EY, Edelweiss, Khatan and Company, law firms, Deloitte, banks, and you can see Grant Thornton. So KPMG, all are big names. So they are giving campus placements to persons, to the professionals qualifying from this course. So these all consultant companies and big companies have network with Indian Institute of Corporate Affairs. So they are members of that, and they usually take up the students in their placement before their
qualification. So these are contact person for this course. Dr. KL Dingra is in charge, and the address is given. So it is situated in IMT Manesar district, Gurgaon, and website is there. You can check the further details from there. And with this, I complete my deliberation. Thank you very much. If you have any question, I would be glad to answer the same. Thank you, Rajesh ji, for your deliberation. Thank you, sir. Thank you. Yes, as such, I am just looking after the Q&A session, but Yes. as such, no question is there. One question is from Nidhi Srivastava that I just reading it out. If the Yes. company is liquidated, but the creditor company has no powers to write off the outstanding amount, what should be the course of action as the creditor company is required to pay the dues? The company, but the creditor company has no power to write off the outstanding. What should be the course of action as a creditor company? The company is regulatory, but the creditor company has no power to write off. Company is liquidated, it will have to be written off if it is order is passed by the NCLT. So that is applicable unless until it is challenged in NCLT or Supreme Court. So if it is not recoverable, they will have to write off. That order is the no due certificate only. Ji, another question has come from CA Ankush ji. Can an IRP charge agree to charge less than minimum fee prescribed by IBBI in case there are no tangible assets and company is practically not a going concern and COC refuses to bear the CIRP expenses being voluntary I think case? he's talking about voluntary. Yes, voluntary In case of CIRP voluntary case. CIRP, I would say it is voluntary liquidation because voluntary CIRP, if there are creditors, so then you will have to go through the entire process. If there are no creditors, you can take then it is liquidation only. I have done various voluntary liquidations. In that case, I agree that there are very small balance sheets, hardly anything. Just Yes. company want to distribute its assets to the shareholders. In that case, you can take the fees as reasonable. You can take. So there is no bar for the fees in that cases. Yeah. Yeah. Okay. He's but talking about COC. But when there is COC means there are creditors, and creditors do not want to bear the expense. Then you should not take up the assignment, in my opinion, because there is lot of, even if there is no assets or no liabilities, there are so much of paperwork. You will be stuck up at least for 2 years with NCLT. So you will, considering all this, you should take up the fees, reasonable fee, considering your time value of your professional time. One question from Ashok ji. Any scope for professionals nearing 70? Sir, professional nearing 70 can become partner or director of IPE. He cannot take up the because 70 is the age after which you cannot practice as an insolvency professional, but you can become director or partner in IPE or a consultant to any IPE or another professional firm or company. You can give your
professional services to them. You cannot take up assignment in your name. So that's all we have done with the question answer session. Thank you, Ji. Thank you. So now I would like to call Jagjit Singh for the formal vote of thanks to everyone so that we can close this webinar. Thank you, Jackie ji. Thank you. Thank you for your precious time because, as a moderator, so your time is also important because after Because he is not allowed to sleep or go away. but this is the only person he cannot move any Yeah, yes. because this webinar, the master key of this webinar is only with the Jackie Batra ji. Yeah, yeah. So he has to be here. Even I was listening, both the speaker. So Yes, sir. when I got, Yes. sir, Rajesh sir and Suchita ma'am, I got a request from one of the members who is attending this webinar. The name of that member is Rajesh Kyavat. So he's basically, he's a practicing chartered accountant. Earlier he was working in practicing chartered accountant from Hyderabad. So today he is in Delhi. So he is looking Okay. for the PPT. So whatever the PPT, the information which you have shared during your deliberation. So I request both the speaker kindly share your PPT with the NIRC@ICI.com, right? You have the email ID. So from where you have got the invitation of this webinar. So kindly Sure, sir. Sure. send the PPT so that PPT will be shared with the present member and of course within the group of this annual member of the ICI, this NIRC, because we have some more than I would say more than 1,500 members. We have the group WhatsApp group, so we will share those both the PPT to those members actually, so they will Right. take the benefit. Even maybe whenever they feel they have some question after reading your PPT or maybe after understanding this topic once again They by can forward anytime, sir. by We themselves, would, they will call you again. They yeah, will yeah. call No you problem. again No. for further query. So Always welcome. I would say as a formal vote of thanks. So great job done by Jackie Batra ji and of course Suchita ma'am and the I would say the second speaker Rajesh Dhawan ji. You all three person, whether as a speaker, whether as a moderator, for this successful this webinar, making this webinar successful. You have done a great job. So thank you very much for your precious time, your informative presentation. This PPT in the form of PPT, that is good for the member for the value addition. So now I would request to the office from the technical staff member. So Sanjeev ji is already working at the backside. So Rajesh Dhawan sir, this certificate Thank you, sir. Thank you. appreciation is just a So, token of love from NIRC. thank you, Ji. Thank you. Efforts. So, I thank you. We are all actors. You are the sutradhar of this. So, credit goes to you. No, it's of course it's a big I would say the plan or the target or the goal designed Yeah. by our the chairman of NIRC. Yeah, yeah. So, So both we of are you. just I following thank that both way. of you. Yeah, yeah. Sanjeev ji, for the next speaker. So he's from CA, he's for CA कमल भाटिया जी, हमारे जो चेयरमैन है यमुनानगर ब्रांच के, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद. कमल जी, are you there? You want to say something, sir, Kamal ji? So this is a token of love for you, sir, from NIRC. Thank you, ji. Ji. Sanjeev ji, for the next, Suchita ma'am. Ma'am, this is a small, of Thank you course, so much, sir. for just a certificate of appreciation for your wonderful efforts in this webinar. And another one, brother, Jackie ji, this is your consideration, I would say. The efforts Yes, which sir. we have, and we are looking forward also, Jackie ji, because we have so many webinars. So whenever you find some time, so we will stay with Yes. you, stay connected with you, and definitely we will provide you another opportunity as a moderator of the next program. And if you want to come as a speaker for any topic, so definitely that would be great for us and for the members. Yes, yes. Anything want to say, anyone? So this is last opportunity. After that, I have to conclude this. Anyone? Rajesh ji, Suchita Sir, ma'am. thank you very much for giving me this opportunity to deliver my whatever knowledge I have to share with my fellow professionals with your help. So anytime in future also you need my any service, any help, I'm always there.
Great, sir. It's Just at a call. Just at a an call. honor for us, sir. It's an honor for us. Suchita Thank ma'am, over to you. थैंक यू सो मच सर, आपने जो ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, और इसके अलावा मैंने कुछ ब्रीफ भी बनाए हैं जो वर्बल ब्रीफ है मेरे, और मैंने वो चैनल इनकॉर्पोरेट किया है, आओ सीखो आईबीसी। क्या बात है, तो बहुत Very हाँ, good, very तो good. उस पे भी जाकर के लोग, जैसे Correct. समझ में नहीं आता, केस 160 पेज है, 180 पेज है, हम नहीं पढ़ पाते और हमें याद ही नहीं रहता इनफैक्ट वो केस। तो वो एक वर्बली कोई बता देता है ना कि ये इसके फैक्ट्स हैं, तो वो हमें याद हो जाता है। तो वो स्टूडेंट्स को भी मदद करेगा। इनफैक्ट मैंने सीरीज भी शुरू करी है जजमेंट्स की, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो आईबीसी कोर्ट्स में भी हैं। तो उसको अगर वो वर्बली कोई सुन लेगा तो वो भी एक रहेगा कि वर्बल वे है वो मेरा। Very good initiative. Huge round of applause for ma'am. You know, your wonderful job. थैंक यू सो मच। Jackie ji, last, you want to add something? Yeah. It's good to meet everyone, and just improving the knowledge always give us the goosebumps also. Means we are into the chartered accountancy profession. So day by day we need this improvement in our knowledge. So this all we can say. So it's a running process. We will be there always for them. Correct, sir. I would like to add one thing more. Ji, Rajesh. Due to you, I have to study PGP. I was not aware of PGP because I just qualified as ILI, being qualified professional. So that added to my knowledge. Okay. Rajesh ji, it's a team efforts. Yeah, When someone is working for one area, another one has to work yeah, for the other area, then yeah, that is team effort. So that is why we can learn from each other. So this yeah. should be the technique, and that is why our ICI is available in the market. So we are spreading knowledge to the other Yeah, professionals. Another professional, they are sharing the knowledge with the. So whenever we share, we get additional knowledge. Yeah, That is great, true. sir, great. Yes. Yes. So thank you everyone. Thank you all the present members. So Thank stay you very tuned much. with us. Tomorrow we have another program. So definitely you will get the information. So thank you everyone. Thank you all the Thank you. speakers. Thank you. Rajesh ji, Thank Suchita you so ma'am, much। Jackie bhai, Kamal Thank ji, you. Okay. and